Hello student, welcome to MDC Learning. So in today's video we are going to cover very important topic from SY BCom. This topic belongs to module number 1 and the topic name is PPC curve and consumer and producer surplus. Student, in this video first of all will understand that what is PPC curve and what is producer and consumer surplus. Both the concepts are interrelated to each other, so both the concept I will explain in one video. First, what is the efficiency? As we know very well in economics that means are always scarce. means resources. Resources are always scarce. Scarce का मतलब होता है less. So resources are always less and wants are unlimited. हमारी इच्छाएं ज़्यादा होती है बट उन्हें कंप्लीट करने के जो रिसोर्स होते हैं दैट इज़ मोर. दैट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज वी नो फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड. सो means are less and the wants are unlimited. So how we use that scarce resources and how we can satisfy our all the want, how we can produce on a maximum level, that is called efficiency. Now productive and allocative efficiency. A free market is expected to achieve the best possible resource allocation and produce optimum output. First of all, allocation means distribution. In a market or we can say in a economic, productive efficiency का मतलब होता है कि when we are able to distribute and when we are able to allocate and we can say distribute available resources in such a way that with the help of less input we can produce maximum output. Then the concept of productive and allocative efficiency will understand with the help of PPC curve, which is known as production possibility curve. It is also called transformation curve or production possibility frontier. So in short, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हाउ वी कैन यूज़ लेस रिसोर्सेज एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट. Then this concept will understand with the help of diagram. In the diagram you can see y-axis represent Y commodity, x-axis represent X commodity. Then you can see AB is a production possibility curve. AB is a production possibility curve and the point inside the AB and the point outside the AB means जो point प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के कर्व अंदर है या जो पॉइंट उसके बाहर है दैट डजंट रिप्रेजेंट प्रोडक्शन एफिशिएंसी. सी if any point outside and inside the production possibility curve that lead to productive inefficiency. मतलब इकोनॉमी में कोई भी पॉइंट जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर हो मीन्स द पॉइंट विच आर ऑन PPC कर्व दैट लीड टू प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन इकोनॉमी. सो इन द डायग्राम यू कैन सी point BDC. These 3 points are on AB. These 3 points are located on a PPC curve. PPC curve means production possibility curve. So point BDC always represent productive efficiency. और एक और point है that is point A. But point A located inside the PPC curve. So point A represent productive inefficiency. If we move from A to B, that time output of Y commodity increase from Y to Y1. And if we'll move from A to C, then output of X commodity increase from X to X1. So what the point wants to say that एग्जाम में किस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक के लिए आ सकता है. सो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी इज एन इकोनॉमी अचीव व्हेन इकोनॉमी प्रोड्यूट एट अ पॉइंट ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. मतलब क्या कहा गया है कि इकोनॉमिक्स में प्रोडक्टिव एफिशिएंसी हम कब अचीव कर सकते हैं व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग एट द पॉइंट विच इज़ गिवन ऑन PPC कर्व. Inside the PPC and outside the PPC that represent productive inefficiency. Next is allocating efficiency. What is allocating efficiency? Allocating efficiency refers to a situation when it is impossible to change the allocation of resources in such a way to make one person better off without making another person worse off.
सी एलोकेटिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, रिसोर्सेस आर लेस एंड मीन्स आर अनलिमिटेड. सो एलोकेटिंग एफिशिएंसी कब हमें अचीव होती है? एलोकेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. सो एलोकेटिव एफिशिएंसी कब हम अचीव कर सकते हैं? व्हेन वी आर एबल टू डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेस इन सच अ वे कि वन पर्सन बेटर ऑफ, एक पर्सन को बेनिफिट मिल रहा है विदाउट गेटिंग अदर पर्सन वर्स ऑफ. That is called allocative efficiency. We'll understand this concept with the help of two criteria, that is called consumer surplus and producer surplus. Now what is consumer surplus? Consumer surplus means the price a consumer is willing to pay minus price paid by buyer or consumer. कंज्यूमर सरप्लस का मतलब होता है द प्राइस अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस प्राइस पेड बाय बायर. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट सम कमोडिटी एंड यू आर विलिंग मतलब आपकी इच्छा है, यू आर विलिंग, यू आर रेडी टू पे 100 रुपीज़, बट एक्चुअल यू पेड 50 रुपीज़ एंड गॉट दैट कमोडिटी. सो you save your 50 rupees. That is called consumer surplus. See, consumer surplus means many times we need some commodity and services on urgent basis, and we used to say that I am ready to pay whatever money they want. तो हम ज़्यादा पैसा देना चाहते हैं, बट एक्चुअली वी यूज टू पे लेस. तो जो पैसे हमारे बच गए, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस. वन मोर एग्जाम्पल, सपोज यू आर वेरी थर्स्टी एंड फॉर वन ग्लास ऑफ वाटर यू आर रेडी टू पे 20 rupees, but you got one glass of fresh water by rupees 5 only. So you saved your 15 rupees. That is called consumer surplus. So the price a consumer is willing to pay minus price paid by buyer is called consumer surplus. Then producer surplus. Producer surplus का मतलब होता है market price of commodity minus minimum price the producer must receive. मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी के प्लेस पे वी कैन ऑल्सो राइज प्राइस रिसीव बाय सेलर, एंड द मिनिमम प्राइस द प्रोड्यूसर मस्ट रिसीव के प्लेस पे वी कैन राइज कॉस्ट टू सेलर. सो प्रोड्यूसर सरप्लस मीन्स मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटी माइनस मिनिमम प्राइस द प्रोड्यूसर मस्ट रिसीव. प्रोड्यूसर सरप्लस मीन्स जो कमोडिटी का मार्केट प्राइस है उसमें से प्रोड्यूसर को कितना प्राइस मिलना चाहिए, दैट विल माइनस. For example, you are a producer and you produce a commodity. To produce a commodity, you spend 10 rupees. So minimum price the producer must receive is 10 rupees. कॉस्ट क्या है सेलर का? 10 रुपीज़, बट मार्केट में उसका भाव चल रहा है 20 रुपीज़. सो 20 minus 10, that is 10. So you got 10 rupees extra, that is called producer surplus. So producer surplus means the market price of commodity minus actually firm should receive. मार्केट का प्राइस क्या है कमोडिटी, उसमें से फर्म को एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए, दैट difference is called producer surplus. We'll understand this concept with the help of diagram. In the diagram you can see y-axis represent price and x-axis represent quantity. Sx is a supply of x commodity, dx is the demand of x commodity, and E is a equilibrium point. At point E, demand and supply both are intersect. Then OQ is the output. Output क्या है यहाँ पर? OQ. So OQ is the output. Then first we'll find out what is consumer surplus. So OQ output है यहाँ पर. For OQ output, consumer is willing to pay OB price. For OQ output, consumer is willing to pay OB price. But the market price of OQ is OP only. OQ आउटपुट के लिए कंज्यूमर रेडी है OB प्राइस देने के लिए, बट मार्केट प्राइस क्या है उसका? OP. सो उसने कितना सेव किया? द एरिया PEB. द एरिया PEB. सो द एरिया PEB इज नोन एज कंज्यूमर सरप्लस. सो कंज्यूमर सरप्लस रिप्रेजेंट द एरिया अबव PE लाइन. PE लाइन क्या है? प्राइस लाइन है. नेक्स्ट इज अगेन OQ इज द आउटपुट. Now we'll find out producer surplus. Suppose OQ is the output, और OQ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसका कॉस्ट है OA, बट मार्केट प्राइस क्या है? OP. तो प्रोड्यूसर को कितना एक्स्ट्रा मिला? एरिया AEP. एरिया AEP. सो
that is called producer surplus. So producer surplus represent the area below PE line, below price line, and consumer surplus represent area above price line. Again in short, OQ is the output and OB price consumer willing to pay, but actual market price है OP. So the area PEB is called consumer surplus. Next is OQ is the output, then cost of seller is OA, market price is OP. So the area AEP, the area below PE line, is called producer surplus. So in this way we can find out consumer and producer surplus. So in short we can say consumer surplus means the consumer willing to pay minus actually he paid, and producer surplus means the market price of commodity minus the cost of seller. If you want to find out total surplus, then हम क्या करेंगे? टोटल सरप्लस निकालने के लिए वैल्यू टू बायर माइनस प्राइस पेड बाय बायर. वैल्यू टू बायर मतलब बायर कितना देना चाहता है माइनस एक्चुअली उसने कितना दिया, प्लस प्राइस रिसीव बाय सेलर माइनस कॉस्ट टू सेलर. इन सब के एडिशन को हम लोग अगर टोटल करेंगे देन विल गेट अ टोटल सरप्लस. सो टोटल सरप्लस इक्वल value to buyer minus cost to seller. In this way we can understand the concept productive efficiency in the market. Student, listen this video again and again, and entire thing you will write down in your notebook. Exam point of view it is very important. So what type of question can come? That is number one question, productive efficiency always shows on dash curve. So on PPC curve, inside PPC curve, outside PPC curve. So your answer will be on PPC curve. Next we'll say consumer surplus relate to dash. So consumer surplus equal consumer willing to pay minus actually he paid. Producer surplus refers to dash. Producer surplus means the price producer get minus the price he should receive. So this type of concept you will write down in your notebook. Student, listen this video again and again, and entire thing write down in a notebook in a form of notes. Thank you so much.